asking should you delete your profile? No, the active followers. The inactive followers. The followers, you can't do anything about them because they're your followers. You can't do anything for them. Eventually they will become active. For example, you started a Twitter 5 years ago and you don't see a value in it now, but maybe 5 years later you might see a value. Everything changes, right? So you don't know what will happen. As far as deleting an account, never delete an account. Always have a profile even if you don't use it. Anything else you want to add? One last question and then we can yeah. I don't have any particular question. Basically, I want to only comment. I want to add my comments on your conversation. Actually, as I'm very big social media you can say, activist, I use frequently the Facebook and LinkedIn account. I have an observation. I believe that in marketing, this is very important for you to how to address your customers. And we use different channels for addressing our customers. I believe I'm very big fond to use the Twitter, but I don't use Twitter. I use Facebook because I want to interconnect it to my students. So I feel that most of our audience or most of our students are on Facebook. So I don't use Twitter. Same thing goes with the Instagram. As you can say, director of Muhammad University, I don't like to prepare Instagram for marketing of the university because where our audience is using Facebook. So I believe Instagram is not very active in Pakistan as a marketing tool or marketing channel. It can be improved in the future, we believe. Second thing, you discuss about the clothing business. In Pakistan, our consumer behaviors are quite different than America and USA. In USA and UK, I have been there in UK as well. If we see any type of clothing on internet, we can buy it. But in Pakistan, we try to touch it. First of all, we touch the clothing and we touch with some other things other than electronics. Then we buy. To assure the quality, basically. So our consumer behaviors are different. So usage of Instagram is the same business in Pakistan, or same concern in Pakistan. So first of all, we need to go to the importance of Instagram first. Then we can work on marketing from there to marketing channels. This is my. No, you're absolutely correct. Can I add something into it? There are universities currently in Pakistan as well. They started making short videos of course description so that they can offer it through Instagram as well. So that kids of youth age, as he mentioned, that the Galla wala guy, I don't remember his whole name, it was like that youth usually follow Instagram. So to target them, you can use that platform as well. Zabis is doing that, some other universities are also doing that. Okay. It is working in Pakistan. Right, no, but I also agree with you, sir, when you talk about, okay, so if that's the culture here that you want to feel, look, if you're local and you want to sell locally, you absolutely could create your account, show your images, and encourage people to come to your shop or come to your store if you have a physical store. Post a little thing on there as an incentive. You could have a contest. We say, you know, tag so many friends, and if they come in and they purchase, you'll get it, you know, I'll give you a free thing, or maybe once a month you pick someone that is locally here in Karachi, and they will win, you know, an item of their choice. Or possibly, you know, to encourage people to come to your shop, you could have, if you do, you know, hashtag whatever the name of your store is, or whatever the item is, and tag people and they follow your directions, bring it in and you show it to them, and then they get a discount. So that's a way that you can use it locally, right here, right now. Thank you so much, Jocelyn, for an amazing insight. The right market, which is using Instagram, is going to be here in 10 years or 5 years because they're growing, and then we will all realize how important it is. If you guys don't mind, I want to just conclude
the session, and we also have Dr. Zhu who wants to teach you a small little meditation. Dr. Zhu has been here for 5 years in Pakistan, and she understands Pakistan, and she's the only Goli driving around in Karachi that I know of for Pakistan, for that matter, who goes around and speak and help us out. Before I also do that, I want to thank both of our speakers for being here. They have an amazing network, and I don't know if you've heard the saying that your net worth is equal to your network. So if you have a large network, your net worth automatically goes up. So here's an opportunity for you to, after this, we would love for everyone to come and have a photo with them and tag them on your social media, Facebook, Instagram, Twitter, and so you can get larger following just because you tag them, right? Because their followers will see, they met them, maybe I can meet them through them. So that's one thing. And second, gentlemen, what's your name? Azim. So Azim, I see, have like 10 books in him about different subjects, and I would encourage you to, again, get in touch with Mitch and maybe co-author some books with him about the knowledge that you have, because you obviously are knowing more than the normals in this country, and there are no content in Urdu about the social media in this country. Absolutely nothing. I'm not good with Urdu either. You don't have to, but you know how to speak in Urdu. Yeah. So the easiest way to write a book is to have a conversation with 2 people, mentor them, have a workshop with them for 2 days, record everything which is going on, have it typed, you have a book. Very, very simple to have a book. And the book is the new business part. When you go in, you give your book, this is what I have done, what have you done. So every single person in this room, I would encourage you, every single professor, lecturer, I would encourage you to at least have 1 book out, have a good co-author, like somebody from outside, to have a different perspective, because everything has 2 sides. And once we have both sides, it's easier to understand kya hai. So again, I would strongly encourage you, you all have an expertise in one thing for sure. There's no one on earth कि ऐसा कोई subject है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो. 2 आदमियों की सिर्फ mentoring करें, पूरा session record करें, 4 घंटे के अंदर एक आपकी किताब तैयार हो जाएगी. And that would help you a lot in your career and everything, and with your life. आपके सबके पास बहुत knowledge है, उसको जितने जल्दी impart देंगे, तो अच्छा. So I want to talk about what we did talk about today, which was marketing. Marketing, दुनिया का सबसे बड़ा brand क्या है? The cross. The Christian cross is the most recognized logo on the planet. Similarly, crescent, right? So these brands are recognition for something in the world. 100 साल पहले हमारे पास हवाई जहाज नहीं होता था, तो हम लोग पानी के जहाज पे जाके सऊदी अरब जाते थे, और थोड़े पीछे चले जाए तो पानी के जहाज भी नहीं होते, गाड़ियाँ नहीं होती थी 100 साल पहले, तो हम लोग घोड़ों पे सफ़र करते थे, बग्गियों पे सफ़र करते थे. हम सब के वालिदैन दादाओं ने जो है वो बग्गियों में सफ़र किया और कुछ नहीं होता. Change is the most eminent thing which is coming. 50 साल पहले गाड़ियाँ आना शुरू हुई, सिर्फ 50 साल पहले गाड़ियाँ आना शुरू हुई. सिर्फ 30 साल पहले फोन आना शुरू हुए कॉमन आदमी के पास. 20 साल पहले इस मुल्क में फोन लाइन देने के लिए प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचना पड़ता था, सिर्फ 20 साल पहले. और आज पान के दुकान पे जाते हैं और फ़ोन की लाइन मिल जाती है. हर पाकिस्तानी के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया. अगर 10 साल पहले कोई आपसे कहता कि हर आदमी के पास ना, चाय वाले के पास मोबाइल होगा, सिर्फ 10 साल पहले भी लोगों को यकीन नहीं आता कि ऐसा हो. Change is constant, and the only constant is change. It's constantly coming. And similarly, 7-8 साल पहले मैं फेसबुक के बारे में इस तरह जाके लेक्चर देता था, लोग मुझे बहुत डांटते थे, क्यों तुम लोगों को खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो. बट मुझे कुछ चीज़ें वक्त से पहले नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मैं सफ़र ज़्यादा करता हूँ. अंग्रेज़ी में सफ़र करता हूँ, उर्दू में, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ी में सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं. और ख्वाहिश ये होती है कि जिस तरह कोई पेशेंट यहाँ तड़प रहा हो, उसका खून निकल रहा हो, तो डॉक्टर की तड़प क्या होगी, यार किसी तरह से इसको जान बचा. तो मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का डॉक्टर समझ लीजिए कि 25-30 साल हो गए इसके साथ, बचपन से ही शुरू हो गए थे, तो मुझे तकलीफ होती है जब मैं किसी को देखता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी तकलीफात कम हो जाए.
बढ़ नहीं जाए। और इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करें ताकि हमारा काम उस टाइम को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकें कि ज़्यादा टाइम हम उनको दे सकें जिनको हम देना चाहते हैं। तो मेरे नज़दीक सोशल नेटवर्किंग जो है ना वो आज से शुरू नहीं हुई, 2000 साल पहले चर्च से शुरू, फिर मस्जिद से शुरू। हम मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में नमाज में सबको साथ खड़ा करते हैं, सब बराबर होते हैं, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। फेसबुक में भी क्या होता है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। प्रेसिडेंट के पास भी कोई ताकत होती है, आपके पास भी कोई ताकत होती है, सब बराबर हो जाते हैं। मस्जिद में जाते हैं हम और एक दूसरे से अगर मिलना शुरू कर दें और उनको सोशल मीडिया पे ऐड कर लें तो वो बॉन्ड बढ़ जाए। तो हमने कैंपेन शुरू की है पिछले 5 साल से, हर मस्जिद को फेसबुक का ग्रुप, पेज, व्हाट्सएप का, अब हमने व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाना शुरू कर दिया, ट्विटर भी बनाना शुरू कर दिया। मस्जिद का कोई ऐलान हो आपको SMS पे आ जाए, मस्जिद में कोई ऐलान हो आपको व्हाट्सएप पे आ जाए। मस्जिद में आप जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं नहीं है, लेकिन फेसबुक पे दूर से देखा कि आदमी देखा हुआ है, मैं इसको 5 साल से दे रहा हूँ, पता नहीं क्या करता है। तो फेसबुक पे जाएंगे तो उसका नाम पता चल जाएगा, अच्छा अगली दफा जाएंगे तो अहमद भाई बड़ा अच्छा लगा था आपकी फोटो। अब हमको आइस ब्रेकर चाहिए, तो क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, तो जो बिगेस्ट स्किल सेट आप किसी को दे सकते हैं वो दे सकते हैं कि उनसे बात कैसे करें, क्योंकि ये स्किल सेट मुझे भी नहीं आती। 27 साल की उम्र तक मैं भी नीचे देख के चलता हूँ और बिल्कुल एक अजीबोगरीब लगता था, दिल बड़ा चाहता था कि मैं उनसे बात करूं, सर को सलाम कर लूं, अच्छा लग रहा है, लेकिन शर्म के मारे मुझसे बात ही नहीं होती। तो फिर किसी ने बोला जिसने शुरू करी शर्म उसके फूटे करम, ये भी समझ में नहीं आई, लेकिन उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। और 5 साल पहले मेरे दफ्तर में कम्युनिकेशन का ह्यूज प्रॉब्लम था और उस कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम को ठीक करना सारी जिंदगी मेरे था। और 5 साल पहले मुझे डॉक्टर सुजाना मिली, मैं कम्युनिकेशन सिखाती हूँ लोगों को, बात करना सिखाती हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा आप आए हमारे यहाँ